Today we are going to discuss about the anesthetic consideration for a patient who was scheduled for the cardiac surgery. So the outline for today's session are the introduction, the preoperative assessment, and what could be the pre-bypass hemodynamic strategy and post-bypass hemodynamic strategy, and what are the fluid tallies and the checklist for going on bypass and off bypass. And then we will discuss about the intra-aortic balloon pump and the ICU shift. ये जो बाईपास मशीन है, सो सीपीबी हम उसको कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कहते हैं हम उसको। उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम में हमने यहाँ पे फ्लो वो ड्रा की है। ये आपका पेशेंट हो गया, पेशेंट से हम जो है वो ब्लड ले लेते हैं थ्रू राइट एट्री कैनुला। उसके बाद जो है वो रिजर्वायर में आते हैं आपके यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिल्टर लगे होते हैं, फिर वो नीचे ऑक्सीजनेटर लगा होता है ये वाला। उसके बाद जो है वो आपके यहाँ से देखिए हीट एक्सचेंजर जो है वो अवेलेबल होता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे रिजर्वायर में आते हैं और उसके बाद फिर पंप में आते हैं। ये आपका पंप हो गया, रोलर पंप। लास्ट में हम बीच में पढ़ेंगे कि पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूजल है, ये दूसरे भी पंप अवेलेबल हैं। उसके बाद अगेन फिल्टर पे आते हैं और आपके पेशेंट को जो फेमोरल कैनुला में है या जो आयोटा में कैनुला प्रेजेंट है वो पेशेंट को जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So talking about the introduction, so cardiac surgery जो है वो as such simple procedure नहीं है like the orthopedic surgery, like the general surgery. It's a very dangerous and complex field of medicine जिसमें आपके patient की morbidity and mortality वो बहुत ही common है. So the quality and aesthetic care with a specific attention to detail can greatly enhance the patient safety and outcome. Detail जो है अगर आप ignore करते हैं तो आपका patient जो है वो can lead to disaster. This presentation will specifically focus on the bare bone sequences of the cardiac anesthesia for the adult जो आपके coronary artery bypass, CABG and valve procedures with a specific recommendation. This is not all inclusive or definitive, but it is the minimal clinical requirements for the patient who are suffering from the uh, ischemic heart disease and scheduled for the CABG or the mitral or aortic valve procedures. So it's not necessarily if you keep your head screwed on very tightly and pay 100% attention at all the time, things will go poorly some of the time. So it's not necessarily. The patient examination includes the uh, cath lab reports, echocardiography, and ECG, so in cardiac history, and critical information about the left main artery. If the patient is suffering from left main stem, there's a lot of chances कि वो जो है वो during induction आपका patient cardiac arrest में चल सकता है। और द इक्विवेलेंट जो भी पोर डिस्टल टारगेट एजेक्शन फ्रैक्शन हो, EVDP हो, या प्रेजेंस ऑफ एनोरिज्म हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो और वेल्वुलर लीजन हो, एंड पेशेंट विद सफरिंग फ्रॉम द कंजेनिटल लीजन्स. So each of these points required a modification of anesthetic technique and specific information is required. So आप जो है वो पेशेंट को एंजाइना किस तरह वो मैनिफेस्ट करता है, किस तरह वो डिस्क्राइब करता है. यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्बल रिपोर्ट्स एज वेल एज their जो charts है उनके. If a patient angina experiences a shortness of breath, nausea or vomiting and heartburn, or whatever, you need to able to link that symptom to the possible myocardial ischemia. So past medical history includes जिसमें आपके COPD आ जाता है, TIE आ जाता है, stroke, cerebral vascular disease आ जाती है, renal disease है, hepatic insufficiency है. These all will changes the anesthetic consideration. एलर्जीज, टॉकिंग अबाउट द एलर्जीज, दीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज आपके पेशेंट की वो look for specifically anti-anginal regime as their patient is suffering from the COPD, और जो है वो कितने इम्पोर्टेंट है कि वो एंटी एंजाइनल पे रहे थ्रू आउट द प्रोसीजर और बिफोर द ऑपरेशन थिएटर से वो पहले आपने उसको एंटी एंजाइनल लाजमी देने हैं. As well as the beta blocker and calcium channel blocker, nitrate and ACE inhibitor should remain on their drugs throughout the preoperative period. So the patient should get all the anti-anginal medication on the day of the surgery and following the surgery. The day of the surgery is the wrong time to go through a withdrawal of the process, and anti-anginal this can lead to severe disaster of the patients. So in physical examination airway, there's a lot of tests to evaluate about difficult airway or difficult ventilation, difficult mask, bag mask ventilation. These are the Malampati classification, Lehman test, or mouth opening test, Cormack and Hani for the laryngoscopy, either direct or indirect. Talking about the chest, so check for the pneumonia, COPD, or is the patient in the failure. Uh, Check for the murmur or for heart failure,
abdominal check for the ascites और obesity. लैब रिपोर्ट्स में आप जो है वो CBC, प्लेटलेट्स, स्लाइड्स, बर्न, CR, ग्लूकोज, PT, एपीपीटीटी, ये आप सारा कुछ देखेंगे. Then check for the pleural effusion, tumors and cardiomegaly also. ECG में हम देखते हैं either a patient from suffering from LBB or RBB. Uh, Critical information: if a pulmonary catheter is planned, occasionally patient with LBB can develop third degree heart block with the pulmonary catheter placement. So keep in mind that a patient हो अगर वो इसको LBB है और आप उसको जो है pulmonary catheter put करें, so वो जो है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक पे जा सकता है. उसको अगर वो रीसेंट EMI है तो टू दे फ्रिस्टिंग इस्कीमिया, वो स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, प्रेजेंटल है, क्या है उसकी सेगमेंट चेंजेस जो है वो आप देख लें. चेक फॉर दी PFT pulmonary function test or ABG, arterial blood gas analysis, either suffering from the respiratory or alkalosis or respiratory or metabolic alkalosis or acidosis. Information: tell them about the arterial line, pulmonary catheter and post-op ventilation, because आप उसके guardian को, उसके parents को बताएंगे कि we have to do all the procedure. Talking about the consent, so patient have a cardiac surgery, which is very serious and frequent complications में आपके MI हो सकता है 6%, CVA भी 5% हो सकता है, new psychiatric effect भी हो सकती है 90% of the patient, and in 13 to 10% of the patient जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आपके वो डेथ उसकी भी हो सकती है. सो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिजीज़ जो है वो आपके 40 to 90% भी हो सकता है. नमोनिया पोस्ट ऑपरेटिव में दीज आर द वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, which is the 10%. You must discuss these risks with the patient guardian or the patient also. So a clear note with all the standard detail and consent. They will get an arterial line, pulmonary catheter, transesophageal echocardiography with the computerized record. So it is easy to get all the patient information. Make sure you sign your note so that it is visible to other computer users as well. Keep in mind that. So pre-medication, majority of the patient they understand the risk is real. They will also come to the ischemia with the stress. So at least 40% get ischemia preoperative with the good pre-medication. So most will without. So give them oxygen नजर को न लाके थ्रू आप जो है वो pre-med में आप वेलियम दे सकते हैं जो नॉन डिपोराजन सॉरी जो एंजाइलोटिक एजेंट है, जो ट्रांसकुलाइजर है. मॉर्फिन समहाउ आप दे सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड मॉर्फिन इन प्रीऑपरेटिव सेटिंग. डाइजेफॉर्म जो है वो आप 10 mg/p आप ओरल रूट से आप दे सकते हैं. ऑन कॉल और ऑरल गुड चॉइस. प्रीऑपरेटिव विद वाटर से आप दे सकते हैं. तो मेडिकेशन इन प्रीऑपरेटिव, ऑल द पेशेंट मस्ट गेट देयर एंटी एंजाइनल. आपके बीटा ब्लॉकर है, एंटी एंजाइनल है, आपने उसको प्रीऑपरेटिव लाजमी देना है, उसको विड्रॉ नहीं करना. So if a nurse put a patient on 9 p.m. to 9 a.m. BD drugs, then state in the chart that the patient to get जो भी उसका drugs है advisor है with a sip of water at 6 a.m. before going for the procedure. Otherwise, at 9 a.m. they will be in the OR. So needing their anti-anginals, so be incredibly clear in your pre-op orders, or they won't get their pre-medication, and which can lead to disaster of the patient. So withdrawal of the anti-anginal medication during cardiac surgery increase the risk of MI, CVA, cerebrovascular accident, and renal failure. Do not do it. Do not do it. Keep in mind that आपने उसको pre-op medication लाजमी देने हैं. So talking about the pulmonary catheter, at the present time, all bypass cases get the standard monitoring plus an arterial and the pulmonary catheter. जो आपके एक आर्टिकल है JAMA में that suggests that PA catheter offer little additional information and have inherent risk in ICU patient. So as yet, this has not changed our practice. So it is clear, however, the placement of the PA catheter must be incredibly skillful without injury to other structure. So with no proven benefit, all the risk must be reduced. So usually we avoid the pulmonary catheter. Anesthesia, despite our best effort, we have not been able to demonstrate that one form of anesthesia obviously better than other exception of the halothane, influence, CO4 and isophone and जो भी है. So high and low dose narcotics, propofol based on anesthetics are equivalent as long hemodynamic or control. Desflurane
induction have a demonstrated cause of pulmonary hypertension and myocardial ischemia. So usually we avoid desflurane. So desflurane is the only anesthetic not recommended for a patient with the coronary diseases which can lead to coronary steal phenomena. So usually we avoid desflurane. We will use sevoflurane and isoflurane. The doses ranges for the fentanyl which is 100 से लेके 200 mics per kg अगर आप जो हाई डोज में आप चेंजना चाहते हो. अगर मीडियम डोज में तो 20 to 40 माइक्स, अगर लो डोज में तो 1 to 5 माइक्स आप दे सकते हैं. सियोफिंटा के लिए भी 4 to 20 to 40 माइक्स हाई, मैडम जो है वो आपके 10 to 20 है, एंड लो पे आप 1 to 2 माइक्स है. रेमिफेंटा विच इज़ वेरी वेरी गुड ड्रग्स 0.2 to 0.1.0 mics per kg per minute आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं. So midazolam in high dose you can use 3 to 5 mg per kg, in medium dose you can use 2 mg per kg, and low dose आप 0.5 mg per kg आप दे सकते हैं. Talking about the remifentanil to quote one of the great masters of the cardiac anesthesia, there's a lot of things that one can do while standing up in a clinic, but why bother? Remifentanil is a very short half-life, जिसके आपके तकरीबन 5 to 10 minutes है, because of its metabolism by non-specific cholinesterase in the plasma. So it allows rapid emergence in the metabolism of the drugs. So it can be used for the cardiac surgery, but its cost is too high. So and some narcotic must be given prior to wake up in the ICU. अगर आपके पैसे पे पास पैसे ज़्यादा है, so you can use for remifentanil. So reduction in dose may be possible by giving a longer action in cheap narcotics. फेंटा की बात आप करें तो वो बेस्ट है फिर. A propofol, you should try a case with a propofol using continuous form, जिसके आप जो टीवा हम कहते हैं, and one where is added with bypass. And if it is expensive, but allow a simple technique जो है वो आप for the early extubation. If the early extubation and discharge form is anticipated the expense of the drugs that make it possible to easy to justify. We will in the next video we will discuss about the planning for the early extubation and intubation and induction. So in the next session we will discuss on the planning for the early extubation. Thank you.